Guys, so in this video we will see how to connect our database with Django project. Okay, so to do that you have to install a package called MySQL client. So pipenv install MySQL client. Okay, installing MySQL client, so it has installed. Alright, so here you can encounter an error. There might be an error for you, so just Google that thing and sort it out, because if you don't sort out, then you won't be able to move forward. So in my case, some error had come, like I had to install the homebrew first, and then MySQL client was running in my computer. So for you it could be different, so I just hope that you don't encounter any problem. All right, so now here you can see I'll go to my settings.py, and inside that settings py I'll just इसको मैं नीचे कर दूंगा. Okay, now settings.py के अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पे these two things were there earlier, these things were not there. So if you are doing along with me, then you'll have to manually enter this, like engine as django.db backends.mysql instead of SQLite. Earlier SQLite was there, so I have already changed it while practicing. I had done it, so I'm not going to do it again. So you just keep it in mind that earlier only these two things were there, and now you have to delete this, and you have to start with this engine as MySQL, name as storefront which we had created, host will say keep the same name as localhost, and user we had root, and password over here is my password which I had entered during installation of my database. So you can change your password here. In this case, during production time, this password will not be visible. I'll tell you how to do that in subsequently in the later on slides. I'll tell you how to keep your passwords, because this password is in plain text and we don't keep that password in plain text. So that will come to later on. For now, just keep your password, whatever password you had kept, and then after this go to your browser and see if everything is running. My server is running perfectly fine. Okay, so if there is an error in your case, then you might have to figure it out that what has happened and what problem has occurred. Okay, after this I'll simply go to control backtick, and over here I'll do migrations. Okay, so I'll write python manage.py migrate. So I had already done it, so in my case there won't be any changes. Python manage.py migrate. Okay, so no migrations to apply. Now if you go to your data grid, and over here if you come, you can see inside this storefront you have all the tables. Okay, I'll delete this query console. Okay, now you see inside this storefront, if you come over here, you have all the tables which is available in your VS Code. So you had all the tables over here, and now it has been migrated to this database. You can see Django migration sessions, light items, address, everything is there inside this. If you go inside this, you will find the tables which are there. So you can see. Okay, so 0003 is the last migration which we had to perform. Okay, so now again back to VS Code. So I hope that you have done this and you have not encountered any problem till here. So I'm with hoping we'll move forward. Now we'll run the custom SQL. Okay, so for doing that, sometimes we need to have full control over generating and updating our database schema. Okay, so Django makes it easy for that, and for doing that what we have to do two things. पहला है कि create an empty migration, and दूसरा है कि एक arbitrary SQL कोड लिखना पड़ेगा आपको उसके लिए. ठीक है, सो सबसे पहले काम हम करेंगे कि एक empty migration बना लेंगे. ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं जाता हूँ. ऑलराइट, python manage.py, you have to make a empty migrations. So you will write make migrations, and किसके अंदर में, स्टोर के अंदर में, स्टोर, और उसका क्या नाम दे देंगे, empty करके एक बनाएंगे हम. तो python manage.py make migrations store -empty, enter. So it is saying
make migrations, did you mean make migrations? Some mistake happened? Okay, yes, mistake is there. Python manage.py make migrations, TIONS होगा, ठीक है। तो ये बना दिया हमारा 0004 करके एक माइग्रेशन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। नेम ऑफ कोर्स यू कैन चेंज, बट आई एम नॉट चेंजिंग इट राइट नाउ. So if you come over here under migrations, you can see this migration file. Okay, control backtick, तो ये हट जाना चाहिए. Okay, now you can see 0000 file. So now under operation part you can see it is empty because हमने empty बनाया है एक migrations, ठीक है। अब क्या करेंगे, inside this we will write a second thing that is arbitrary SQL code. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिपल कोड खोलो, ठीक है। सो आई राइट, सबसे पहले एक ऑपरेशंस करेंगे हम इसमें, तो आई राइट माइग्रेशंस डॉट रन SQL, ठीक है। ओके, बेसिकली दिस इज ए क्लास डिफाइंड इन माइग्रेशन मॉडल, ठीक है, दैट वी हैव इम्पोर्टेड इन, जो हमने इस माइग्रेशंस को हमने इम्पोर्ट किया ना उसके अंदर में एक क्लास है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, इसमें दो चीज़ हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। पहला तो एक टाइटल स्टोर कलेक्शन जो भी हमें टेबल इंसर्ट करना है, और दूसरी चीज़ है वी हैव टू डिलीट दिस. बेसिकली वी आर परफॉर्मिंग टू थिंग्स, वी आर अपग्रेडिंग अ डेटाबेस, सेकेंड थिंग वी आर डूइंग वी आर डाउनग्रेडिंग द डेटाबेस, ठीक है, दैट बेसिकली रिवर्टिंग द माइग्रेशंस, ठीक है. So now we will create an instance of this class. Okay, so here in the constructor we have to supply two statements, SQL statement. First instance for upgrading our database which we are going to write. So मैं लिखूँगा यहाँ पे ट्रिपल कोट, ठीक है, और एक और ट्रिपल कोट, और इसके बीच में हम लिखेंगे अपना कोड, ठीक है। तो पहला है, सबसे पहले बोलो कि इंसर्ट कर दो, ठीक है, एक स्टोर कलेक्शन नाम का एक आपका टेबल. सो आई राइट स्टोर कलेक्शन, ओके, जिसका एक टाइटल होगा, ऑलराइट, और वैल्यूज़ होगी एक, उसका नाम हम क्या रख देंगे, वैल्यूज़ का नाम रख देंगे कलेक्शन 1, ठीक है, सॉरी कलेक्शन 1 करके एक वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इसको हमें इनसाइड कोट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इंसर्ट करो एक स्टोर कलेक्शन नाम के अंदर में एक टाइटल जिसका वैल्यूज़ रहेगा कलेक्शन 1, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, ये दो बार क्यों आ गया इधर, ये टाइटल यहाँ पे आएगा एक, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद एक कॉमा दे दो और फिर एक ट्रिपल कोट खोल दो. ये क्यों बार बार ऐसे आ रहा है यार. फिर एक, ठीक है, इसको वापस से सेकेंड लाइन पे ले आएंगे हम. And from here onwards we will write second thing which we are going to give, the argument which we are going to pass is कि इसको delete करना है. Now if I don't provide a delete वाला over here, then what will happen, we will not be able to migrate back. Basically migration को हम revert नहीं कर पाएंगे, ठीक है. So for that purpose we have to provide this second argument also. So it is a best practice to do it, so please do it. So I'll write delete from store collection, ठीक है, सेम, where title equals to same collection 1, ठीक है, हो गया. Now if you can see सब कुछ perfect. So we are basically here we are making migrations dot run SQL, देन ट्रिपल कोट एक खोल के वहाँ पे हमने लिखा है कि इंसर्ट इनटू स्टोर कलेक्शन के अंदर में इंसर्ट कर दो एक टेबल, ठीक है, जिसका नाम कलेक्शन 1 रहेगा, जिसकी वैल्यूज़, और उसके बाद दूसरा पार्ट है उसको डिलीट कर देना, ठीक है, स्टोर कलेक्शन से जहाँ पे जिसका टाइटल है कलेक्शन 1 का. ओके, नाउ गो बैक टू योर टर्मिनल. सो आई विल कंट्रोल बैक टिक और यहाँ पे मैं लिखूँगा पाइथन manage.py migrate. सो आई राइट पाइथन manage.py migrate. ओके, अप्लाइंग माइग्रेशंस कर दिया इसने. नाउ यू कम टू योर डेटा ग्रिप, ठीक है, डेटा ग्रिप के अंदर में आएंगे अभी. नाउ डेटा ग्रिप के अंदर में हमने क्या बनाया था, स्टोर कलेक्शन करके बनाया ना. सो अंडर स्टोर कलेक्शन यू कैन सी
यहाँ पे इसने टेबल बना दिया है कलेक्शन 1 करके, ठीक है, जिसका टाइटल कलेक्शन 1 है. सो हियर वी हैव सक्सेसफुली मेड इट. नाउ सेकेंड थिंग इज दैट नाउ वी विल रिवर्ट दिस, ठीक है. स्टोर कलेक्शन में जो ये टाइटल बनाया है हमने उसको हम रिवर्ट करेंगे सो दैट वी कैन मेक श्योर दैट वट एवर इम्प्लीमेंटेशन वी हैव डन दैट इज करेक्ट. सो बेसिकली आई विल गो बैक टू माई टर्मिनल, ठीक है, एंड हियर आई विल राइट python manage.py, basically migrate the store to 0003, ठीक है. now running migrations done, ठीक है, unapplying changes. so now if I come back I'll go to data grip. यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ you can see that collection 1 has gone, ठीक है. so we have successfully done the migration and successfully reverted the migration as well. all right, so this was all about the reverting the migrations and writing a particular SQL code in your database. all right, so that was all about it, and next class we will generate the dummy database and we'll populate our database with the some of the dummy values. all right guys, so thank you so much for watching me and I see you in next video guys. Take care.